इसने कुछ देखा क्या हफ्ते भर में कि सो रहे थे? हम्म। ठीक है, अगर नहीं देखा तो खुश रहो. लेट्स सी नाउ, लेट्स स्टार्ट, लेट्स प्रोसीड फर्दर. Okay, so can you see this? Yes, sir. ठीक है, so now we are going to look at vaporization equilibrium constants. It's a term which we use, is most commonly used in petroleum refining industry, where you have high pressure VLE, okay, and hydrocarbons mostly. So we have seen, we define vaporization equilibrium constant as K, which is nothing but Yi upon Xi. So at equilibrium, what is the vapor composition divided by what is the liquid composition. Okay, and we have seen that at equilibrium, the fugacity of component I in liquid phase is equal to fugacity of component I in vapor phase, right? And we have seen that Fi bar V is equal to Yi phi bar V into P, and Fi bar L is equal to Xi gamma L Fi 0, right? Or we can write as Fi bar L is equal to Xi phi bar L into P. Is nothing new. So if you substitute equation 3 in equation and 4 in equation 2, you'll get equation 6, which is y phi bar b into p is equal to xi gamma l fi 0. And if you substitute 3 and 5 in equation 2, you'll get equation 7, which is y phi bar vp is equal to xi phi bar l into p, right? और pp cancel हो जाएगा, we'll get y phi bar v is equal to xi phi bar l. If you write this in the form of k, ki is equal to y by xi is equal to phi bar L upon phi bar V. Its viscosity coefficient in the liquid phase divided by vapor phase. And from 6, we can write Ki is equal to y by xi is equal to gamma L Fi 0 upon phi bar V into P. These are things we have done before, just summarizing it. What is K? ठीक है? Any questions? This we have done before also, right? Only we are writing in the form of K. And we also seen that high pressure VLE के लिए pointing correction factor लिया तो we got equation 11, right? Y phi bar V P is equal to gamma IL xi phi is PIS exponential VI into P minus PI S upon RT, right? So equation right, you can write equation 11 in the form of Ki, which is nothing but Y by xi is equal to right hand side. ठीक है? Any questions on equation 11, 12? 11 तो हमने derive किया ही था. We are just rearranging it and writing in the form of K. And we know that phi is viscosity coefficient at saturation, and Vi is molar volume of pure component in the saturated liquid phase. And we have seen viscosity coefficient कैसे evaluate करने का using equations of state. Now, if pointing correction factor is equal to 1, when is pointing correction factor equal to 1? याद है किसी को? When can we assume that pointing correction factor is equal to 1? नहीं याद है किसी को? When the pressure is not high. Okay.
So when the pressure is not high, we can assume pointing correction factor equal to 1, and we get equation 13, which is Ki is equal to phi s gamma L Pis upon phi bar V into P. And as the vapor phase behaves as an ideal gas, then phi s is equal to phi bar V equal to 1, and we get Ki is equal to gamma L Pis upon P. So we are starting with high pressure, general case, then simplifying it, assuming that the pressure is not high, then the ideal gas behavior, and then if you assume that liquid behaves as an ideal liquid, ideal solution, then gamma I is equal to 1, and we get Ki is equal to Y by Xi is equal to Pi upon P. And this is nothing but Raoult's law applicable to ideal solution and ideal gas. So we always start, okay, we have started from simple solutions and then added complexity. Now we are going the other way, starting with a general case and simplifying it to see how it reduces to Raoult's law for ideal solution and ideal gas. So K factor for ideal solution and ideal gas depends only on temperature and pressure, because right hand side of this equation 15 is PIS. PIS is vapor pressure at that temperature, and P is total pressure. So it's function of only the temperature and pressure of the solution, not of the composition. That's important. You should remember that. Okay. So for light hydrocarbons, equation 12, this was the equation, general equation which we simplified. It can be simplified if you have two assumptions, that intermolecular forces are weak. When intermolecular forces are weak, that means we have almost like ideal gas, vapor behaves like ideal solution, phi bar V equal to phi equal to figure of pure component, and liquid behaves as the ideal solution. Okay, that's what we have done. Right? So what we get is essentially K as a function of temperature and pressure only, which we have seen before from this equation 15. So now if you look at hydrocarbons, there are some charts available which show K value as a function of temperature and pressure. Okay, so this for all hydrocarbons, it's methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, octane, nonane, decane. So there are charts available for all hydrocarbons, and this is called a nomograph. There are two axes. There is a pressure here and the temperature here. So if I want to find the K value for any component, suppose I want K value at say 5000 kPa, right? Pressure is in kilopascal, 5000 kPa, and I want at say 200 degrees centigrade. So I'll take this point, I'll take this point, and I'll join these two, right? Suppose I want at 5000 kPa and 200 degrees centigrade, right? So I'll take these 2 points and connect this. Oh, sorry. क्यों नहीं जम रहा है ये? Anyway, let's see if I can just connect it like this.
Okay, so if I connect these 2 points, 5000 kPa and 200 degrees centigrade, it will intersect at these points for various components, and that is the value of K for each of those components. Is this clear to you? Yes, sir. Okay, so these charts are available. They're called deep Priester charts or deep Priester nomographs. Deep Priester prepared them, and they are available for all the hydrocarbons at high pressure and high temperature. So it's very easy to get the K values for hydrocarbons, and it is widely used in the petroleum refining industry for calculations. Okay, any questions on K value and how to use it? देवेंद्र समझ में आया क्या? Yes, sir. Okay, so let's proceed further. Then next we'll go to bubble point calculations. So using K values, how do you do the bubble point calculations? You have done bubble point calculation before, right? याद आ रहा किसी को? किया कि bubble point calculation हमने? Yes, sir. Before your vacation. What do you remember, is it? Yes, sir. So what is bubble Yes, point sir. calculation? What do we do in bubble point calculation? What is bubble point? Sir, boiling point of a solution means the range at which the solution boils. Dikshita, what is bubble point? The temperature at which the first bubble appears. Yes. Temperature at which the first bubble appears. That's a basic definition of bubble point. You should remember all these things. Bubble point क्या होता है, dew point क्या होता है, right? So if I take a liquid of composition xi, what is the vapor composition in equilibrium with this composition of liquid, right? So we know that composition of liquid xi, and we need to find what is the composition of the vapor, right? To find bubble point temperature, pressure is given, normal pressure is given, and liquid composition is given. So assume a temperature, and now we are going to use K values, right? So get K values at this temperature T using all these charts. Then we calculate yi, because we know that Ki is equal to yi upon xi. So we can use K values to find out yi. And at bubble point, when the liquid is, at the bubble point, when the vapor is formed from the liquid, the vapor composition will be suppose yi. So summation of yi has to be equal to 1, because अगर दो component है, तीन component है vapor में, तो sum of all the mole fractions in the vapor phase should be equal to 1. बराबर है? Liquid के लिए तो रहेगा ही, because that is given already, right? So vapor के लिए we have to make sure that if you are calculating y1 and y2, so if it is a binary system, y1 plus y2 is equal to 1, because sometimes if the temperature is not selected correctly, we will not get y1 plus y2 equal to 1. So the condition to be satisfied is at bubble point is that summation of yi is equal to 1. Okay. If equation 1 is not if it is satisfied, then the temperature assumed is the bubble point. If equation 1 is not satisfied, then it assume a new temperature and repeat till equation 1 is satisfied. Okay. समझ में आया कैसे कैलकुलेट करना है बबल पॉइंट टेम्परेचर?
Any questions on how to do this? सर एक्स आई नोन होगा ना? हाँ, बबल हाँ? पॉइंट क्या बोल रहे हैं? एक्स आई नोन होगा ना? एक्स आई नोन होगा ना? XI क्या? XI is given. क्या होगा ना एक्स आई? XI is given. बोला ना मैंने. XI is known. ओके सर. Liquid composition is known. We are finding bubble point. That means liquid composition जो दिया हुआ है, X1, X2 जो दिया हुआ है, उसके इक्विलिब्रियम में वेपर कंपोजिशन क्या है और टेम्परेचर क्या है निकालने का हमारे को. राइट. That's why we assume a temperature. Temperature नहीं पता हमारे को. Only pressure is given. So we assume a temperature. Then from the deep pressure charts, we can find for that temperature and for that pressure the K values of each component. Once you know the K values, you can find out Yi is equal to Ki into Xi. And then we test whether summation of Yi or Y1 plus Y2 if it is binary system is equal to 1. If it is not, then we again assume a new temperature till we get equation 1 satisfied. सर क्या है, कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे? अभी तो बताया ना मैंने, डीप प्रेशर चार्ट्स. सो रहे थे क्या? ओके सर. ये बताया ना मैंने नहीं सर. आपको कैसे निकालने का. ये बताया कि नहीं मैंने? प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है. यू कैन ड्रॉ लाइन कनेक्टिंग दिस टू प्रेशर एंड टेम्परेचर्स एंड दिस चार्ट्स आर अवेलेबल. तो जहां पे इंटरसेक्ट करेगा दैट इज द के वैल्यू फॉर दैट कंपोनेंट. यस सर. और कोई क्वेश्चन है किसी को? हेलो सर वो इक्वेशन सिर्फ पॉइंट के लिए क्यों वो नहीं समझा? क्या एट बोल रहे? बबल पॉइंट के लिए. सर वो इक्वेशन 1 है ना, वो बबल पॉइंट पे क्यों ही वैलिड है? क्योंकि हमारे बबल पॉइंट ही फाइंड करने का ना. प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? नहीं मतलब अगर बबल होगा तो भी वैलिड होगा ना, मतलब वो इक्वेशन y इज इक्वल टू के एक्स आई इज इक्वल टू 1 समेशन. इफ यू अज्यूम अ रॉन्ग टेम्परेचर, राइट, तो क्या हो जाएगा? यू विल गेट y इक्वल टू समेशन ऑफ y इक्वल टू ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 आएगा. राइट. सपोज माय बबल पॉइंट इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, बट आई अज्यूम से 60 डिग्री सेंटीग्रेड. तो क्या हो जाएगा? व्हाट विल हैपन? Suppose my actual bubble point temperature is say 50 degree centigrade, and I assume, I don't know, so I'm assuming 60 degree centigrade. I find the value of Ki, and then from Ki I will calculate Yi because Xi is given, and then if I do summation of Yi, what will I get? Will I get Y equal to 1, less than 1, greater than 1? ग्रेटर देन 1. Greater than 1, because मेरा हायर टेम्परेचर है तो वेपर कंपोजिशन ज़्यादा रहेगा. राइट. उसमें ग्रेटर देन 1 आएगा, उसमें ऐड अप नहीं होगा because the temperature is not correct. ये समझने की बात है. See, when I'm talking about Ki is equal to nothing but Yi upon Pi, XI, sorry, वेपर कंपोजिशन अपॉन लिक्विड कंपोजिशन. अगर टेम्परेचर में बढ़ाया तो नेचुरली ज़्यादा वेपरेट होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा हायर टेम्परेचर पर. If my bubble point is 50 degree centigrade and I assume 60 degree centigrade as the temperature, तो by calculation जो मेरे को मिलेगा वेपर कंपोजिशन, that is wrong. So that's not the bubble point. समझ में आया देवेंद्र? यस सर. Right. So in this case, if you see that summation, suppose I say that summation Hello. of yi is greater than 1. आवाज आ रहा है मेरा? आ रहा है सर. सर एक डाउट था. यस सर. Suppose I say if
If summation of y is greater than 1, then what should I do? Temperature क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा मेरे को? इंक्रीज करना, डिक्रीज इंक्रीज करना? करना कम पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा. डिक्रीज करना पड़ेगा ना. Decrease temperature, right? And if summation of yi is less than 1, तो क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज. Increase करना पड़ेगा temperature, right? So assume certain value of temperature, find out k value, then from k value find out some yi, take summation of yi, and if it is greater than 1, that means जो assume temperature किया था हमने वो गलत है, वो ज़्यादा लिया हमने. It is not, it is greater than the bubble point, so we have to decrease it. And if summation of y is less than 1, then again temperature is very low, so we have to increase the temperature. अब कितना increase करना, कितना decrease करना, that is trial and error, right? So that will come from calculation experience कि कितना होता है फर्क. ठीक है? Any questions, doubts on bubble Hello. point temperature? Yeah. Sir, is this valid for dew point temperature? We are talking about bubble point, right? So let's focus on bubble point. Dew point next है, वो करने वाला हूँ मैं. Dew point is different, bubble point is different. Don't confuse. Okay, sir. Okay? Focus on what we are discussing. I have clearly बोला we are talking about bubble point temperature calculation only. It's not only temperature calculation, not even pressure calculation. So अगर हमारे को प्रेशर दिया हुआ है सॉल्यूशन का, लिक्विड का, और बबल पॉइंट टेम्परेचर निकालना है और कंपोजिशन निकालना है, तो ये प्रोसीजर है उसके लिए. One at a time. Understand this, then we go to the next one. Is this clear? Yes, sir. Okay. Now if want to find out bubble point pressure, हो सकता है ना कि टेम्परेचर दिया हुआ है सॉल्यूशन का हमारे को. Both are important, right? Temperature and pressure. So we want to find out the pressure. Temperature दिया हुआ तो easy है, right? Again, assume pressure instead of temperature, and then follow the procedure of bubble point temperature जो ऊपर का था. Same thing. Find out k value, find out yi, find out summation of yi कितना होता है. Greater than 1 हुआ तो क्या करने का, less than 1 हुआ तो क्या करने का. In this case क्या करना पड़ेगा? If summation of yi is greater than 1, तो क्या करना पड़ेगा हमारे को? प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा? प्रेशर इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा. इंक्रीज करना पड़ेगा. इंक्रीज करना. And if summation of yi is less than 1, तो क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा. You'll see that. इतना इंट्यूटिवली नहीं आएगा, बट उल्टा आता है. प्रेशर जैसे यहाँ पर था, राइट? हमने यहाँ किया था, समय ग्रेटर देन 1 था तो टेम्परेचर डिक्रीज किया था, राइट? उल्टा ही होता है. टेम्परेचर एंड प्रेशर इज उल्टा, राइट? प्रेशर इंक्रीज किया, टेम्परेचर डिक्रीज होगा. सो विल सी दैट, कैलकुलेशन करेंगे. इतना इंट्यूटिव नहीं है ये, बट ठीक है, लेट्स सी. फोकस ऑन दिस वन फर्स्ट, देन विल सी नेक्स्ट वन क्या करने का. ठीक है? एनी डाउट्स, क्वेश्चंस ऑन बबल पॉइंट कैलकुलेशंस? कितने लोग को नहीं समझाए? आई वांट टू सी हैंड्स. आपको समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है. ओके, सो नेक्स्ट विल गो टू ड्यू पॉइंट. व्हाट इज ड्यू पॉइंट? First condensation drop from
क्या बोले? First drop of condensate form. Yes. So if I take a vapor and cool it, right? If I decrease the temperature of the vapor composition दिया है मेरे को y दिया है, y1 y2 दिया हुआ है, and I decrease the suppose temperature दिया है हमारे को. If I decrease the temperature, then at some point the first drop of liquid will be formed. So that is the dew point. So we need to find out the temperature at which the first drop of liquid will be formed and the composition of the liquid xi. उल्टा है, राइट? उसमें xi दिया था बबल पॉइंट में, yi फाइंड करना था. यहाँ पे yi दिया है, xi फाइंड करने का, राइट? So in this case, you assume a temperature, pressure is given, calculate k values or whatever ग्राफ में निकालने का. Then calculate xi from k values, right? Xi is equal to yi upon k because k is equal to y upon xi. And at dew point, because yi is known, xi calculate कर रहे हैं हम, right? So at dew point, summation of xi should be equal to 1. जैसे पहले हमने देखा था, summation of yi should be 1 for bubble point. For liquid, for dew point, summation of xi should be equal to 1. Right? If this equation is satisfied, then the temperature is correct. That's a dew point. If it is not satisfied, then we have to assume a new temperature and repeat till equation 1 is satisfied. Procedure similar है. Only thing is condition is different. Bubble point का condition अलग है. Summation of y करने का है. Dew point का we have to do summation of xi equal to 1. ठीक है? Any questions? इसमें क्या होगा? Suppose I find summation of xi is greater than 1. Then what should I do? Temperature बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा? Who can tell me? I'll take some names Increase. now. Let's see कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है. शिवानी. बड़ा Increase करना पड़ेगा. हाँ? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा. बढ़ाना पड़ेगा. शिवानी सो रही है क्या? नो सर. क्या करना पड़ेगा? सर इंक्रीज करना. इंक्रीज करना पड़ेगा पक्का? सिद्धि? हाँ. इंक्रीज करना पड़ेगा. इंक्रीज करना पड़ेगा. ओके. एवरीबॉडी एग्रीज इंक्रीज करना पड़ेगा? Yes, sir. ओके ठीक है. लेट्स सी, विल डू कैलकुलेशन एंड देन विल चेक. ओके. और सेम थिंग ड्यू पॉइंट प्रेशर के लिए टेम्परेचर दिया हुआ है. इट अज्यूम प्रेशर एंड रिपीट द कैलकुलेशन सिमिलरली. ठीक है. सो आई थिंक before you proceed further, I think we can do some calculations so that you understand it better, because ये theory रहता है. कोई डाउट है किसी को theory पे before you proceed to actual calculations? Okay, if there are no questions, let us switch to the book.
Okay. So let's do this example. The mixture contains 45 mole percent methanol, 30 mole percent ethanol, and the rest propanol. Liquid solution may be assumed to be ideal, and perfect gas law is valid for the vapor phase. Calculate the total pressure of 101.3, the bubble point and vapor composition, and dew point and liquid composition. Okay? So we have to do pressure is given, so we have to find out bubble point temperature and vapor composition, and dew point temperature and liquid composition. Right? Vapor pressures of pure liquids are given at different temperatures. PAS, this is vapor pressure of A, PBS, vapor pressure of B, and PCS, vapor pressure of C at different temperatures, right? Okay? So vapor pressures of pure components are plotted against temperature so that interpolation of vapor pressure can be done easily. So exact temperature हमको पता नहीं है, so you can do interpolation. Interpolation पता है आप लोगों को कैसे करना रहता है? How you can do? How do you interpolate? Suppose I have a temperature of say 333 and 343. Suppose I want to find out vapor pressure at 330 degrees. Oh, sorry, 340 degrees Kelvin. 340 Kelvin. कैसे निकालेंगे? Who can tell me? It's simple maths. It should have been done in say maybe 12th standard. Linear interpolation. Nitin? Nitin, can you hear me? सो रहा है. Murtaza? Murtaza, can you hear me? सो रहा है ये भी. Deep Patel? Sleeping. Priyanka Garade? Pratiksha? Am I audible, sir? या नींद खुल गई है. पानी लेने गया था बॉटल में. पानी लेने गया था. झूठ बोलता है. पानी लेने गया सर, था. बस सर सुबह बॉटल से पानी पीता ना मैं. झूठा ही है तू. छोड़. सब सो रहा है. जो जिसका नाम लिया नहीं आया ना, आंसर नहीं आया ना, सो रहा है. नहीं सर, उठे कूद गए. खुशी सॉरी है. ऋतुजा? Yes, sir. हाउ डू यू इंटरपोलेशन? लीनियर इंटरपोलेशन कैसे करते हैं? नहीं पता. नहीं पता है. सो रहे हैं सब. गौरी पटोले? अश्विनी पोटे? Yes, sir. अटेंडेंस? Yes, sir. आंसर चाहिए. आंसर. हाउ डू यू डू लीनियर इंटरपोलेशन? कमलेश लाकड़े? सो रहा है. रितेश कोल्हापुरे? स्लीपिंग. नहीं सर, हाँ तो बताओ ना. सर समझ नहीं आ रहा है. अरे इंटरपोलेशन नहीं किया क्या मैथ्स में कभी आप लोगों ने? सर एक पॉइंट के लिए कितने वैल्यू, तो दूसरे पॉइंट के लिए कितने, ऐसा? I know the value at 333 Kelvin and 343 Kelvin. I want to find out the value at 340 Kelvin. How will I find out? सर स्लोप निकाल के नहीं किया. राइट. स्लोप निकाल के कर सकते हैं और लीनियर अज्यूम कर सकते हैं ना हम.
बिटवीन 333 एंड 343 10 डिग्री केल्विन का डिफरेंस है, 10 डिग्री का डिफरेंस, राइट? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर 133 माइनस 82, राइट? कितना हो गया? कितना हो गया 133 माइनस 82? 51.29. सर किस टेम्परेचर पे निकालना है 340 वेपर पे, प्रेशर? 340 पे। सर 117.9. कैसे निकाला? उन दोनों में का डिफरेंस निकाला 51 पॉइंट समथिंग। वो डिफरेंस 10 केल्विन के लिए टेम्परेचर, फिर 1 केल्विन के लिए कितना होगा वो निकाला, और हमें 333 दिया है, 340 पे निकालना है। 7 का डिफरेंस है, जो डिफरेंस आया था उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। एग्जैक्टली। तो इफ आई टेक प्रेशर, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, यही किया मैंने, राइट? रफ है ये। 333 पर ये वैल्यू 81.97, 343 पे 133.29 है, राइट? सो इफ आई वांट टू फाइंड आउट एनी टेम्परेचर, आई हैव टू जस्ट इंटरपोलेट लीनियरली, वही किया। ये डिफरेंस कितना है लेने का? 10 डिग्री के लिए इतना डिफरेंस है, तो अगर मेरे को 60 डिग्री के लिए चाहिए तो 60 डिग्री के लिए कितना डिफरेंस आएगा? एड टू 81 एंड आई विल गेट द वैल्यू एट this temperature, right? This may be 340 degrees, 340 Kelvin. समझ में आया लोगों को? Yes, no, don't know, don't care. यस सर। सर रिपीट। अरे रिपीट क्या करने का रे? Who was it repeat वाला? वही वो सर। मैथ से 10th 12th का मैथ से रे। I can understand if I introduce a new concept. This is not a new concept, this is revision. Who will explain this now? I'm not going to repeat it. Who will explain this? सर मैं बताता हूँ उसको। हाँ बताओ। हाँ वही भाव, हमारे पास 10 टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, 10 केल्विन, राइट? और हमारे पास प्रेशर, वेपर प्रेशर का भी डिफरेंस पता है हमें उस 10 केल्विन के लिए। तो उनमें से 10 केल्विन के लिए डिफरेंस हमने निकाला, मतलब सर वो वैल्यू दिखाएंगे आप? हाँ दिया वैल्यू ना मैंने, दिखाएंगे क्या क्या एक दिखा बार? रहा हूँ मैं? हाँ ओके। 133.29 at 343 and 81.97 at 333. हाँ उसमें से डिफरेंस कितना है वो 51 पॉइंट समथिंग, वो होगा डिफरेंस 10 केल्विन के लिए। हम अगर 1 केल्विन के लिए निकालेंगे तो उसको 10 से डिवाइड करेंगे, फिर जो आएगा वो हमारा आएगा 1 केल्विन के लिए डिफरेंस आएगा हमारा। हमें चाहिए डिफरेंस 7 केल्विन के लिए, गिवन है 333 और हमें निकालना है 340 पे। 7 केल्विन का डिफरेंस कितना आएगा, जो 1 केल्विन का डिफरेंस आए उससे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और वो आया डिफरेंस उनमें सा। और अगर हमें उस पॉइंट पे निकालना है तो जो पहला था उसको दोनों को ऐड करेंगे, तो उस पॉइंट पे हमारा 340 पे प्रेशर निकल आएगा। समझा? यस प्रणव, धन्यवाद। ठीक है, समझ में आया लोगों को? मैथ्स भूलने का नहीं रहता है, नॉट समथिंग विच यू शुड फॉरगेट। Okay, so let's solve this problem now.
So it says pressure of components are plotted against temperature. वही किया हमने, so that interpolation of wave pressure can be done easily. That's what we showed right now, right? Interpolation कर सकते हैं. If wave of phase can be treated as ideal gas and liquid phase in ideal solution, K values are treated as K is equal to Y upon X and then you got PIS upon P. ये हमने देखा था, right? So if we take this, you can write this equation, summation of Y is nothing but Ki Xi, और substitute किया तो we'll get summation of Xi into PIS upon P is equal to 1. ये condition satisfy होना चाहिए. ठीक है. So now we have to assume a temperature जो भी है and calculate yi depending on, suppose यहाँ पर दिया है 330, suppose you calculate 333, find out summation of yi कितना आता है. Let's do that. Composition दिया है xi, right? xi is what? x1 is what? What is the value of x1? What is the value of x1? Can you see? 0.45. 0.45. What is the value of x2? 0.3. And what is the value of x3? 0.25. 0.25. So value of x1, x2, x3 is given. You know PIS at different temperatures, right? You don't know कहाँ आएगा. So suppose I take calculate for all the temperatures or calculate for 333. 333 लेके मैंने calculate किया, summation of y कितना आता है, calculate करो. Find out for 333 what is the value of summation of y. Everybody will do it. चलो फटाफट. Very simple problem. Find out what is the summation of y at किसका हो गया? Raise your hand. What is the value of summation of y? Can you hear me?
Sir, Devendra. 0.0. Yes. So 0.6072. Hello. Hello, sir. Hello, can you hear me? Yes, sir. माझा काय बोलतो? Summation of y for 333. Sir, voice is breaking. वैभव तुम्हें सुने देना है क्या? नाही रे भाई. देवे हिंदीत का बोलतोय? हिंदी select कर. What is the value of summation of y? Sir, आवाज आ रहा है मेरा? 0.6072. 0.60. Yes. तो सर 43 पे कैलकुलेट करो कितना है समेशन ऑफ y? What is the value of 343? 0.96384. हाँ? 0.96384. 0.96, right? और 353 पे? What is the value of 353? Sir, 1.368. Hello? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Hello? Here? सर आवाज ब्रेक हो रहा है. 44 करके देखने का क्या होता है? So interpolate at 344. So what you need to do is interpolate at 344, find out the value of vapor pressure at 344 Kelvin and find out what is the summation of yi.
you hear me? Yes, sir. CS निकालो and substitute in this value for Kelvin. रिपोर्ट पे निकाला गया पॉइंट क्या समीशन है हेलो हेलो कैन यू हियर मी Yes, sir. Yes, sir. 3 निकालो इसमें किसी का हो गया 344 पे समीशन ऑफ आया कितना है सर 1 आ रहा है वैल्यू 1. एग्जैक्टली 1 आ रहा है यस सर 1.0049. ओके ठीक है so if it is 1.0049 then we can safely say that it is 344 Kelvin as a bubble point. So then find out what is the value of y1, y2 and y3 for this temperature. Y is equal to Ki into Xi, that means y1 is equal to K1 into x1, y2 equal to K2 into x2 and y3 equal to K3 into x3. Find out y1, y2, y3. हो गया किसी का हाथ उठाओ अगर हो गया तो raise your hand. We have only 1 minute left because you have a next lecture now, right? ठीक है तो घर पे कर लेना. Find out y for that temperature where summation of y equal to 1. Okay, and we'll continue tomorrow. Yes, sir.